Yes, students. In this session of elements of calculus, we will discuss here basic idea of integration. Integration, I have already said that elements of calculus is the branch of mathematics. This branch basically divided into two parts: differentiation and integration. Differential calculus and integral calculus. Integral calculus is also known as integration. Integration is the inverse of integration is the inverse of differentiation. Integration we can say is the advanced form of summation. Integration is the advanced form of summation or addition. In the integration, we add up the small elementary portions of the given quantity and get the large quantity or the large function. In the integration, we obtain the original function from the derivative or a differential function. तो बच्चों आज हम एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन. एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है. एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइड होती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशियल कैलकुलस कह सकते हैं, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल कैलकुलस भी कहते हैं. इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का अपोजिट है. इंटीग्रेशन समेशन की एडवांस फॉर्म है, एडिशन की एडवांस फॉर्म है. इंटीग्रेशन में हम स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन ऐड करेंगे और छोटे छोटे पोर्शन ऐड करेंगे तो एक बड़ा पोर्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एक बड़ा फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं. इंटीग्रेशन में हम डिफरेंशियल फंक्शन से ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं. इंटीग्रेशन में एडिशन, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऐड करते हुए बड़ा पोर्शन उसी प्रकार से मिलता है जैसे आप छोटी छोटी ब्रिक्स लीजिए, एक ब्रिक लगाई फिर दूसरी ब्रिक लगाई, सारी ब्रिक्स हम ज्वाइन करते रहेंगे तो हमें पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. तो जो वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है उसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी ब्रिक्स ऐड कर रहे हैं और ऐड करते हुए एक बड़ी पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है. तो वॉल क्या हुआ, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंटीग्रेशन. Integration is same as the process in which we add the small elementary portion and get the large quantity. In same manner, if we add up the bricks, small bricks add up one by one, then we get the whole wall. So when we add up the bricks are the small elementary portion, that we get the large wall. This is the result of addition of small elementary portion. So this is the process of integration. Yes. So if we summarize in one word, if we say, so we can say integration is the modified form of addition. Here we discuss some formulae of integration which we use in physics chapters frequently. First in formula look, this is the first look. This is the symbol of integration, just like a S symbol. This is the symbol of integration. When we do the integration, then we make it that symbol shows that we perform the integration operation. This is the mathematical symbol of integration. Now first formula look. Yes, this is the symbol of integration. Integration x to the power n into dx. It means in the x to the power n we add dx small elementary portion. Then what is the result? What is the result of x to the power n into dx? X to the power n plus 1 upon n plus 1. When we obtain the integration in that manner, then result will be obtained by that formula. Now, if integration a into x to the power n into dx, here a is the constant, then constant remain in multiply and x to the power n into dx. Same manner, x to the power n plus 1 upon n plus 1. If 1 upon integration 1 upon x into dx, so equal to log x base e. Log is the mathematical operator, and integration e to the power x into dx. E to the power x into dx shows that this shows that we add up the dx small elementary portion into in the e to the power x, then we get the result. This is equal to e to the power x. Integration cos x into dx equal to sin x, and integration sin x into dx equal to minus cos x, and integration a to the power x into dx equal to
a to the power x upon log e base a, log e base a is now integration sec square into dx equal to 10x, integration cosec square dx equal to minus cot x, integration sec x 10x into dx equal to sec x, integration cosec square cot x into dx equal to minus cos x, and integration dx equal to x is integration dx equal to x. Integration dx into x means here what is the multiply with x, with what is the multiply by dx? 1 can be written as x to the power 0. 1 can be written as x to the power 0. And what is the x to the power 0 into dx integration, which we do by that formula, x to the power n. So here n is 0. So x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1, 0 plus 1 1, and 0 plus 1 1. So x to the power 1 upon 1. So we get integration dx, integration of dx. तो देखो बच्चों कुछ फार्मूला देखिए इंटीग्रेशन का। पहला फार्मूला देखिए, फर्स्ट फार्मूला, ये इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है एस के शेप का। फर्स्ट फार्मूला देखिए, x टू द पावर n इंटू dx, इसका मतलब है x टू द पावर n फंक्शन में हम dx पोर्शन ऐड करते जा रहे हैं, तो x टू द पावर n इंटू dx इक्वल टू आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही हमने ये देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, इस फार्मूले में इस फार्मूले कोई डिफरेंस नहीं, बस कांस्टेंट मल्टीप्लाई। यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा है तो एज इट इज मल्टीप्लाई रहेगा, इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट कहीं भी मल्टीप्लाई, सभी इंटीग्रेशन में कहीं भी मल्टीप्लाई आ सकता है, इंटीग्रेशन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1 अपॉन x इंटू dx log e टू द पावर x, dx इंटू dx में सेम e टू द पावर x आएगा, एंड cos x इंटू dx sin x, एंड sin x इंटू dx cos x माइनस cos x, and integration a to the power x into dx equal to a to the power x upon log e base a, and integration sec square into dx equal to 10x, integration cosec square dx equal to minus cot x, and integration sec x 10x dx equal to sec x, and integration sec x cot x dx equal to cosec x। और इंटीग्रेशन ये देखिए, integration dx when only dx is present, यदि खाली इंटीग्रेशन dx है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा x। कैसे आएगा? इंटीग्रेशन dx है तो इसके साथ dx का कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई में, dx के साथ क्या मल्टीप्लाई ले सकते हो? 1। dx के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो हम 1 इंटू स्प्लिट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू dx, 1 इंटू dx, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0 इंटू dx। मैं ये बताना चाहता हूं इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x क्यों आया, dx का इंटीग्रेशन x क्यों आया? तो dx के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि dx के साथ मल्टीप्लाई क्या है? x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए x टू द पावर n का स्थान किसमें दे रखा है? 0, तो n की जगह क्या जाएगा? 0। तो x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो x टू द पावर 1 अपॉन 1 मीन्स x। सो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x इस प्रकार से है। Yes, now there are two type of integration: indefinite integration and definite integration. Those integration in which we don't know the initial and final value, what is the final value after integration, that and what is the initial value, these are called indefinite integration. And those integration in which we know the what is the initial value and what is the final value obtained under what limit integration can be take place, called definite integration. Yes,
So there are two types. Yes, students. So there are two type of integration: indefinite integration and definite integration. Indefinite integration, there we don't know the initial and final value of the variable, and in definite integration we know the initial and final value of the variable. Look, that is the length of pen which have a suppose 12 centimeter. Now we add up the small elementary portion, 1 portion, 2 portion, 3 portion of 1 millimeter, and we then the length of we add the one elementary portion, then second, then third, fourth length of element. When we add the length of elementary portion, the length of pen is increased, and length of pen increased, then length of pen become, suppose length of pen become from 10 centimeter to from 12 centimeter to 16 centimeter. So what is the initial value before integration? What is the initial length? 12 centimeter, and what is the final length? 16 centimeter. So when we know that what is the value before integration and what is the value after integration of the variable of the function is known as definite integration. And those integration in which we just know we add the small elementary portions, and but we don't know the what is the initial and final value, that integration are called indefinite integration. तो बच्चों दो प्रकार के इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू फंक्शन की वेरिएबल की गिवन नहीं रहती है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमें इंटीग्रेशन की वो वेरिएबल की गिवन रहती है. ठीक है, जैसे समझिए ये जैसे पेन है, पेन की लेंथ 12 सेंटीमीटर है. अब इसमें मैंने 1 मिलीमीटर का छोटे छोटे पोर्शन ऐड किए, पहले 1 मिलीमीटर का, फिर और 1 मिलीमीटर, फिर ऐसे ऐड करता रहा. करते करते इसकी 12 सेंटीमीटर से लेंथ 16 सेंटीमीटर हो गई. तो इनिशियल लेंथ कितनी है? 16. तो ये हुई लोअर लिमिट. इनिशियल लेंथ 16 सेंटीमीटर और फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ 12 सेंटीमीटर और फाइनल लेंथ 16 सेंटीमीटर. तो 12 सेंटीमीटर से इंटीग्रेशन करते हुए ऐड करते हुए हमें फाइनल रिजल्ट कितना मिला? 16 सेंटीमीटर. तो ऐसे इंटीग्रेशन को कहते हैं जिनमें कि हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता हो रिजल्ट की, उसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया था? यस, नाउ हाउ वी रिप्रेजेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन. लिसन केयरफुली. During indefinite and definite integration, the formula for integration which I have discussed previously does not change. Look, indefinite integration is integration x to the power n into dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. We does not know what is the initial value before integration and what is the final value after integration. Then we put plus constant. Is constant means what is the final value we obtained, what is the initial value. Constant, so the initial value of the function we can say. Indefinite integration represented by that manner: x to the power n into dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant. Is value of constant can be applied as applying the suitable mathematical approach. Now in definite integration, x to the power n into dx, suppose initial value of x is a. Here variable is x in which dx portion add. Then initial value of x is a and final value of x is b. So a is known as lower limit and b is known as upper limit. Lower limit represented by in that manner. Just below the integration we write down the lower limit, and just above the integration sign we write down the upper limit, final value of integration. Formula for integration remains same: x to the power n into dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Now in square bracket we write down, suppose initial value is a, final value is b. Lower limit is a and upper limit is b. Now put the limit. So in place of x put b. When we put in place of x we put b, then b to the power n plus 1 upon n plus 1 minus, that is the rule, that minus, put in place of x put a,
So a to the power n plus 1 upon n plus 1. That is the method to solve the definite integration. तो देखो बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ प्लस कांस्टेंट प्लस किया जाता है. कांस्टेंट सुटेबल मैथमेटिकल अप्रोच से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कांस्टेंट की. इस कांस्टेंट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए, माना इनिशियल वैल्यू x की a थी और फाइनल वैल्यू b हो गई. तो जो इनिशियल वैल्यू होती है उसे कहते हैं लोअर लिमिट और जो फाइनल वैल्यू है उसे कहते हैं अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट इंटीग्रेशन के जस्ट नीचे, अपर लिमिट ऊपर. इस अब इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा. लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर. अब अपर लिमिट की वैल्यू पुट करो x के प्लेस पे, तो b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, ये रूल है देखिए कैसे माइनस कर, अपर लिमिट वैल्यू फंक्शन फिर माइनस लोअर लिमिट वैल्यू फंक्शन. तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे a, तो a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. yes, that is a, this is the initial value and that is the final value. So how much value increase? b to the power n plus 1 upon n plus 1 minus a to the power n plus 1 upon n plus 1. Why we do minus? That's why. Yes, look, why do minus? Look, that is the length of 12 centimeter. And when we add up the small elementary portion, then length becomes 16 centimeter. Then how much increase? 16 minus 12 means final value minus initial value. So this is the final value of the function and this is the initial value of function. So how much increase? Final value minus initial value. So in definite integration we get the result upper limit value function minus lower limit value function. Yes. So now look some example of integration. Yes. Look example. Integration root x into dx. Integration root x into dx can be written as integration x to the power half into dx. So what is the value of that integration? Yes. What is the power on x to the, what is the power on x? Half. So x to the power half into dx can be solved by the formula x to the power n into dx. What is formula for? We apply the formula that integration x to the power n into dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Here in place of n there is half. So x to the power half plus 1 upon half plus 1. So x to the power half plus 1 upon half plus 1. So integration x to the power half into dx equal to integration 1 plus 2 upon 2 upon 1 plus 2 upon 2. So integration x to the power half into dx equal to x to the power 3 by 2 upon 3 by 2. So you can write down 2 by 3 into x to the power 3 by 2. Now look next. Yes, next example. Look, x to the power integration from limit 2 to 3 x cube square plus 3x plus 7 into dx. That integration written in that manner. X to the power 2 limit is, this can be written as integration 2 to 3 x square into dx plus 3x into dx plus 7 into dx. Now there is 3 integration. You can write in that manner also. 2 integration 2 to 3 x square into dx plus integration 2 to 3 3x into dx plus integration 2 to 3 7 into dx. Now we use formula, same formula, x to the power n into dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Here there is a limit, lower limit 2, upper limit 3. So
x, what is the value of x to the power n into dx? What is the integration of x to the power n into dx? Yes, look here, apply the formula. In place of n we put 2, so x over 2 plus 1 upon 2 plus 1, so x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1, bracket close, lower limit 2, upper limit 3, plus 3 into, what is the value of x into dx? What is the power on x? 1. So x to the power 1 plus 1 means 2 upon 1 plus 1, 2. Apply that formula in x to the power 1. So here in place of n we put 1. Here in place of n we put 1. So x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1. So x to the power 2 upon 2 is limit 2 to 3 plus 7 is a constant, and integration of only dx, integration of dx is x, limit 2 to 3. Now put the value limits. So here is actually 2 is obtained in that manner, 1 plus 1 upon 1 plus 1. So we can obtain x cube upon 3 limit 2 to 3 plus 3 into x square upon 2 limit 2 to 3 plus 7 into x limit 3 by 2, 2 by 2, lower limit, upper limit 3. Now put the limits. Is now when we put the limits, then look, when we put here limit, first of all upper limit put place in place of x 3, so 3 cube upon 3 minus input in place of x 2, so 2 to the power 3 upon 2, bracket close, plus 3, look in place of x we put 3, so 3 square upon 2 minus input in place of x2, so 2 square upon 2 plus bracket put in plus 7 into bracket put in place of x3, so 3 minus 2, then simplify, so x equal to 3 cancel, 3 square 9, 9 minus 2 cancel, 2 square 4, 9 minus 4 plus is 3 upon 2, 2 we can take common, 9 minus 4, 3 square 9 and plus 7 into 3 minus 2, 1. So 9 minus 4, 5 plus 5 into is 3 upon 2 into 5 plus 7. So 7 plus 5, 12 plus 15 upon 2. So 24 plus 15 upon 2. 24 plus 15 upon 2. That's by 39. 39 upon 2. So 2 1 2, 2 9 18, 19.5. This is the result. तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन जैसे होना है वैसे ही हुआ। जो फॉर्म इंटीग्रेशन, एडिशन में जो क्वांटिटी थी सबका तीनों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया। इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से किया, x टू द पावर n इंटू डी एक्स, यहाँ n कितना है 2, तो एक पावर ऐड हो गई उतने से डिवाइड कर दिया। इसका इंटीग्रेशन किया, x पे 1 पावर है तो 1 में 1 ऐड हो गए उतने से डिवाइड, dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर ब्रैकेट में डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स दे रखे हैं, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब लिमिट पुट की तो सबसे पहले x के प्लेस पे 3 पुट किया तो 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस x के प्लेस पे 2 पुट किया तो 2 क्यूब अपॉन 2 प्लस 3 इंटू x के प्लेस पे 3 तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x के प्लेस पे 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7 इंटू
एक्स के प्लेस पे 3 पुट किया 3 माइनस 2 सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ गया. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लुक. Now look, next example, integration infinity to 2 1 upon x square into dx. It can be written as infinity to 2 x to the power minus 2 into dx. What is the power on x? Minus 2. So we apply that formula, x to the power n into dx upon equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. So here in place of n there is a minus 2. So n plus 1 means x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. Limit infinity to 2. So we get result x to the power minus 1 upon minus 1 bracket infinity to 2. So we can write in that manner minus 1 upon x in bracket infinity to 2. Now put the limits. So we can get infinity to 2 1 upon x square into dx equal to, put the limit. So minus, first of all limit minus 1 upon 2 in place of x2 minus in bracket minus 1 upon infinity. What is the value of 1 upon infinity? 0. So minus 1 upon 2 plus 0. Minus 1 upon 2 or minus 0.5. This is the value of integration under limit or definite integration. Now look next. Yes, next example look. Integration 1 upon x into dx limit 2 to 3. So if we do the integration, what is the value of 1 upon x into dx? This according to formula 1 upon x into dx, integration of 1 upon x into dx is log x. That is the directly formula based. Limit 2 to 3. Now put. So log e base 2. Log, first of all put upper limit. So log e base 3 minus log e base 2. Log is the mathematical operation. Log is the mathematical operator. So as in trigonometry, same way log is also be applied. Is so log e base x equal to log e base 3 minus log e base 2. According to log property, log m minus log n can be written as log m upon n. So we can write log e base 3 upon 2 or log e base 1.5. Yes, that is the result of integration. So students, we have discussed some basic idea of the integration. How did we perform the integration? Integration in physics used in various numerical problems like volume, area and other quantities in which two quantities are multiplied. We can use the integration. Is integration can be used in different purpose in physics. That's why before starting other chapters, first of all we discuss a brief idea, elementary idea of elements of calculation, element of calculus is differentiation and integration. तो बच्चों इस सेशन में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस, एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस डिस्कस की, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस किया. इससे पहला लेटर में हमने डिफरेंशिएशन और इस टर्म में इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया डिस्कस किया. बेसिक आइडिया हमने इतना डिस्कस किया है जितना हमें फिजिक्स में आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें हम जो यूज करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को, उस आइडिया को हमने आपके साथ डिस्कस किया है. इंटीग्रेशन का आप देखेंगे एरिया, वॉल्यूम और भी कई आपके फंक्शन क्वांटिटीज आएंगे जिन्हें हम कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. इन अदर चैप्टर वी विल सी दैट देयर इज वेरियस क्वांटिटीज व्हिच कैन ऑब्टेन बाय द इंटीग्रेशन. सो we have discussed basic idea of elements of calculus and differentiation and integration. So students, in this session we have complete basic idea of integration. Thank you.